typical question on the concept of mixtures. We have a bottle that contains 20 liters of liquid A. चलो इस तरीके से इसे बना लेता हूँ. Let's say this is our bottle and here this contains 20 liters of liquid A. Alright. Now 4 liters of it is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. Next step में क्या हो रहा है? If we talk about the next step, so you are taking out actually 4 liters from it, 4 liters of A, and you are replacing it with, you are pouring liquid B. How much? 4 liters. Alright, so what happens? Can I cancel this 20 and write here 16 because 4 is taken out? And how much of B is added? So B is actually 4. क्या आप फॉलो कर पा रहे हो? Alright. Now, if I talk about this mixture, it has become a mixture now. What is the ratio of A and B liquids? A is 16 parts and B is 4 parts, or can I call it the ratio as simplified ratio as 4:1. Now there is a property in mixture which says कि अब आप, क्योंकि we have a mixture now, अब आप 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर whatever the quantity you take out from here, it will always contain these two liquids, that is liquid A and liquid B, in this proportion. मतलब समझना ज़रा इसे. अगर मैं बोलूँ कि आपने अभी 5 लीटर बाहर निकाला, तो ऐसा नहीं होगा कि ये 5 लीटर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड A हो जाए, या ये 5 लीटर में से 4 लीटर लिक्विड B हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता है. इट इज़ ऑलवेज इन द रेशियो 4:1. तो अगर 4:1 के रेशियो में हो रहा है, देन यू कैन बी 100% श्योर दैट 4 पार्ट्स और 4 लीटर्स वुड बी लिक्विड A एंड 1 लीटर वुड बी लिक्विड B आउट ऑफ द 5 लीटर्स ऑफ मिक्सचर. ये मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता है. चलो अब ज़रा सेकेंड स्टेप पे काम करते, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. अगेन 4 liters of the mixture is taken out and replaced by same quantity of B. This time you are taking out 4 liters of mixture. So 4 liters of mixture would contain A and B in the ratio 4:1. So A की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी कंटेंट होगी? A के लिए अगर आप देखो तो 4 parts out of 4 plus 1, that is 5 parts into the 4 liters. And what about B? B is actually 1 part out of 4 plus 1 parts into the 4 liters of mixture. So we get this as 4 by 4, or 4 into 4, 16 by 5, which is 3.2. And naturally this must be 0.8. आप कैलकुलेट भी कर लो. 4 by 5, 4 by 5 का मतलब 0.8. Okay, so can I say this 4 liters of mixture that we have taken out actually contains 3.2 liters of liquid A and 0.8 liters of liquid B. चलो अब ज़रा देखते हैं आइडियली इस बॉक्स में क्या हो रहा है. आपने इस बॉक्स में 4 liters of B फिर से ऐड भी करा है because it is again replaced. Now finally let's look at the mixture box कि क्या हो रहा है. मिक्सचर वाले मुझे दिख रहा है 16A लिक्विड था, उसमें से 3.2 चला गया. सो 16 minus 3.2 is 12.8 of A एंड B अपने पास 4 था, 4 और ऐड हो गया 8 एंड 0.8 चला गया. सो दिस इज 7.2. 7.2 is B. I hope you are following this. Initially it has 4. 4 is again added up and then 0.8 is actually taken out in 4 liters of mixture.
So that we have subtracted and we get this. Now what is asked? What is the ratio of liquid A to that of liquid B in the final mixture? So A is to B is what we are looking out for. So that can be written as 12.8 is to 7.2, or this is 12.8 upon 7.2. So the points are cancelled out. अब ये 4 से cancel out हो जाएंगे. So 32 and this is 8 or 16 upon 9. So the ratio is nothing but 16 is to 9. Option C is our correct fit. Now there are other methods of looking at it, ठीक है, but as of now आप इस method को follow कर लो. But there is a shortcut method to look at कि after nth replacement what is the quantity left of a pure liquid. जैसे यहाँ पे pure liquid था A, because initially the bottle contained 20 liters of pure liquid A. तो वो आफ्टर nth रिप्लेसमेंट क्या होगा उसकी वैल्यू, वो अपने लोग डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला निकाल सकते हैं. द फार्मूला इज समथिंग लाइक द क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर nth रिप्लेसमेंट इज गिवन बाय टोटल इंटू 1 माइनस आर बाई टोटल इंटू एन टू द पावर n, जहाँ पे टोटल हो जाएगा मेरे लिए 20, 1 माइनस आर इज 4 बाई 20, एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन दिस? यू हैव डन दिस 2 times. So this is how, if you calculate, you would get this as directly 12.8. All right, चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं.